Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend, and this class all about MEG 08. अब इस पेपर को कैसे प्रिपेयर करना है ना, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वी नीड टू क्लियर दिस पेपर अलॉन्ग विद वी नीड टू हैव द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिनको करने के बाद हमें बाकी किसी क्वेश्चन करने की जरूरत ना पड़े. सीरियसली वी रियली नीड द सर्टेन क्वेश्चन की सिर्फ जिनको क्वेश्चन को करें हम, उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना, वी जस्ट नीड टू स्टे ऑन दैट. चलो ठीक है, एज वी नो दैट वी डू हैव द गुड स्टोरीज इन MEG 08 एज वी हैव the paper known as to be the new literature in English. अच्छा, न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश में कई सारी चीज़ों को कवर अप करना है. आपने कहा कौन से क्वेश्चन हमें आने चाहिए फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट एंड हाउ विल गोइंग टू द मास्टर वे. द फर्स्ट थिंग, पहले कुछ 7 क्वेश्चन करते हैं जो कि किसी स्टोरी लाइन से रिलेट नहीं करते, जो हमें ऑन टिम होनी चाहिए, एंड देन विल गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन एज पर द स्टोरी लाइन, जैसे कि ग्रेन ऑफ व्हीट, अ डांस ऑफ फॉरेस्ट एंड ऑल दो. अब इसमें आपको कौन सा करना है कौन सा नहीं करना, उसके लिए प्रीवियस वीडियोस को देखना लगा, जहाँ मैंने बताया कि सिलेक्टेड कौन से हैं जो आपको करने हैं. कम ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन, कहता है इज न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश डिफरेंट फ्रॉम कॉमनवेल्थ लिटरेचर. दिस इज रियली एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आप बोलते हो सर पेपर में सर ये क्वेश्चन आता है, बार बार पूछा आता है, एंड यू गाइस नीड टू द मास्टर वे. The first, is the new literature in English different from Commonwealth literature? Explain your answer with example. आपको अपना आंसर बताना है with example. That is really important. Jump up next part. Would you say that the diaspora has contributed to the rise of post-colonial theory? Now, what is the diaspora? अभी यहाँ पे हमारे लिए important है diaspora क्या, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है. MEG 12 में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Would you say that the diaspora has contributed to the rise of post-colonial theory? Explain. Next one. Write a note on the origin and development of Caribbean literature. Caribbean literature क्या है, उसकी डेवलपमेंट क्या है, उस पर कैसे काम करेंगे. This is really important. Jump next one. Discuss the role of women writing. ये क्वेश्चन आएगा गाइस. कह रहा है डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन्स राइटिंग इन न्यूली एमर्जिंग लिटरेचर. वुमेन राइटिंग का क्या रोल है. Nice, can give me an example of this. Jump up next one. On what grounds can the term Commonwealth literature be criticized? किन grounds पर आप Commonwealth literature को criticize कर सकते हो. Jump to next one. Discuss the factors that led the evolution of distinctive Caribbean culture. Should I repeat the question? Discuss the factors that led to evolution of distinctive Caribbean culture. Next, what are the implications of the term dark? What are the implications of the term dark in the expression of the dark continent as applied to Africa? तो ये हो गए सर ये क्वेश्चंस, मतलब हाउ गोइंग टू गेट ऑल द नोट्स, मतलब ये सारे आंसर. तो नोट्स के लिए करना क्या होगा, नंबर दिया हुआ है नोट्स के साथ, उस पर कॉन्टैक्ट करेंगे. यू कैन गेट द नोट्स ईजिली, आप ले सकते हैं. फ्री नहीं है, नोट्स फ्री नहीं होते कभी भी, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है. जंप अप नेक्स्ट सेक्शन. सो दोज हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन फास्ट ट्रैक कोर्स और क्रैश कोर्स या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी, तो बैचेस शुरू हो चुके हैं, यू कैन ज्वाइन, एंड द ऑफलाइन क्लासेस आर आल्सो गोइंग ऑन नाउ, यू कैन ज्वाइन दैट टू. चलो यार, टाइम टू डिस्कस सर स्टोरी वाइज. नंबर 1, अ ग्रेन ऑफ व्हीट. अगर ये गिनती के क्वेश्चन 4 to 5 क्वेश्चन वो ई स्टोरी अगर आप कर लेते हो, मैं लिख के देता हूँ, पेपर कहीं से भी आ जाए, यू नो ऑल द आंसर्स, आपको सारे आंसर्स पता होंगे. द फर्स्ट, वुड यू एग्री विद द जॉन थॉमसन्स इन अ ग्रेन ऑफ व्हीट रिप्रेजेंट द कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू. I repeat, would you agree with the John Thompson's in a grain of wheat represents the colonial point of view? Give reasons. जॉन थॉमसन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, किस पे, ग्रेन ऑफ व्हीट पे, वो डिफाइन करता है, कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू को डिफाइन करता है. नेक्स्ट वन, डिस्कस द टाइटल ऑफ द नॉवल अ ग्रेन ऑफ व्हीट विद अ स्पेशल रेफरेंस टू नोगोई वो थॉन्ग्स यूज ऑफ क्रिश्चियनिटी मैथोलॉजी. सर ये क्वेश्चन हमने थिंग्स फॉल अपार्ट में भी पढ़ा था, ऑनेस्टली क्रिश्चियनिटी मैथोलॉजी वाला थिंग्स फॉल अपार्ट, अगर याद हो तो आप वो फाइनल में आपने पढ़ा था. Discuss the title of novel A Grain of Wheat with a special reference to Nogoi Wothong, use of Christianity mythology. Next one, write a critical note on thematic concerns in A Grain of Wheat. Thematic concerns को highlight करना है. Next one, why did Thongs choose resistance to colonialism? Why did Thongs choose resistance to colonialism as a theme of his novel A Grain of Wheat?
तो ये थे वो 4 क्वेश्चन जो आपको ऑन टिप करने हैं फ्रॉम अ ग्रेन ऑफ व्हीट. जंप ऑन नेक्स्ट सेक्टर, दैट इज अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द डांस ऑफ फॉरेस्ट को कैसे क्लियर करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं. अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट. नंबर 1, discuss the significance of the double rules. Discuss the significance of the double roles played by Democ, Rolla, Agbok, etc. I repeat the question. Discuss the significance of the double roles played by Democ, Rolla, Agbok, etc. in a dance of forest. Next one. Examine a dance of forest as presenting issues. Examine a dance of forest as presenting issues of Nigerian independence. नाइजीरियन इंडिपेंडेंस को पूरा डिफाइन करता है, उसके इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है. देन वी हैव द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑन दिस स्टोरी लाइन. कमेंट ऑन द 2 टाइम फ्रेम्स. कमेंट ऑन द 2 टाइम फ्रेम्स एंड द प्ले विद इन द प्ले. प्ले विद इन द प्ले इन्वॉल्व सोलंकीज अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट. तो ये 3 क्वेश्चन थे जो आपको आने चाहिए फ्रॉम द डांस ऑफ द फॉरेस्ट. कम अप टू माई फेवरेट स्टोरी लाइन, दैट्स द आइस कैंडीमैन, बापसी सिद्धवा वर्क. Discuss the various political connotations. Discuss the various political connotations in the novel Ice Candyman. Number 2. Discuss Bapsi Sidhwa's use of English language in the novel Ice Candyman. I repeat the question. Discuss Bapsi Sidhwa's use of English language in the novel Ice Candyman. How does she mold it to suit the contest? वो कैसे mold करती है to suit the contest. Next one. Discuss the issue of identity. Discuss the issue of identity with a reference to women characters in Ice Candyman. Women के characters को highlight करता है. Discuss the issue of the identity with a reference to women character in Ice Candyman. Next we are having Ice Candyman is an autobiographical novel. Yeah, it is. Ice Candyman is an autobiographical novel discussed with a special reference. Discussed with a special reference to Bapsi Sidhwa's status as Parsi woman from the third world. सर ये कॉन्सेप्ट हमें ऑन टिप होना चाहिए. वी नीड टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट. मतलब क्या है, कैसे करेंगे, करने का तरीका को, किन बेसिक्स को फॉलो करना है, सारी चीज़ें आती हैं. नेक्स्ट वन, अगेन अ गुड स्टोरी, माय फेवरेट टू, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास. अ हाउस फॉर मिस्टर, भाई इसको घर नहीं मिला बेचारे को. मतलब लाइफ कुछ होती कुछ होगी ऐसी. ये ऐसा था मिस्टर विश्वास. मतलब पहले पैदा हुआ, फादर एक्सपायर हो गए, पंडित ने बोल दिया था कि मरेंगे इसकी वजह से. बेचारा पानी में कूदा था, फादर का डूब रहे, वो उसे बचाने कूदे, खुद डूब गए. लड़की से फ्लर्ट करा था, गले पड़ गए सीरियसली, शादी हुई बेचारे की. ससुराल से दूर जाना था, ससुराल का इतना इन्फ्लुएंस, बेचारा कुछ कर ही नहीं पाया. पूरी जिंदगी लगी कि अपना घर बना ले, घर बना, लेकिन बेचारा मर गया. तो आपने सर स्टोरी लाइन तो हमें ऑन टिप होनी चाहिए. तो अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास. एग्जामिन द यूज ऑफ irony and humor in a house for Mr. Viswas. Examine the use, I repeat, examine the use of irony and humor in House for Mr. Biswas. Next one. The house of Mr. Biswas indicates different states of mind that conflict with one to another. The house of Mr. Biswas indicates different states of mind that conflict with one another. जो एक दूसरे से क्या करते हैं, सब conflict हैं. Attempt an analysis of the Naipur's House for Mr. Viswas as diasporic novel. Make sure ये पेपर में आएगा as a diasporic novel. Discuss the significance of Hanuman House. तुलसी हाउस भी कहते हैं. Hanuman House in Naipur's House for Mr. Viswas. Come up to poetry segment. सर 2 तरह की पोइट्री, अफ्रीकन पोइट्री की बात करते हैं हमारे कोर्स में. सब दोनों को हमें क्लियर करना है. तो कौन से ये 4 क्वेश्चन ऑन टिप कर लेना है. कहता वॉलकोट्स पोइट्री, इसकी डोमिनेंस ये पेपर में होगा. वॉलकोट्स पोइट्री एग्जाम्स द रिलेशन बिटवीन द हिस्ट्री एंड लैंग्वेज. जो हिस्ट्री और लैंग्वेज दोनों को डिफाइन करती है. कम टू सेकंड पार्ट. इज देयर अ रिलेशन बिटवीन द हिस्ट्री एंड लैंग्वेज. क्या हिस्ट्री लैंग्वेज कोई रिलेशनशिप है? आंसर विद द स्पेशल रेफरेंस डायरेक्ट वॉलकॉट पॉइंट्स. राइट अ नोट ऑन द ओरल राइम्स. आई रिपीट, राइट अ नोट ऑन द ओरल रिदम्स एम्प्लॉयड बाय Kamau Bethel. Kamau Bethwich in his poem Wings of a Dove. Make sure ये on Timothy. Wings of a Dove. Discuss Bethwaite's now restriction analysis of the Jamaican society in Wings of a Dove. मैं पहले बोल चुका था. तो आई होप कि आप लोग इससे जरूर पढ़ेंगे. Come next one, the solid mandala.
Yes, the important one, the solid mandala. The first question, the themes of the novel are reflected by the characters in the solid mandala. The themes of the novel are reflected by the characters in the solid mandala. Discuss. Jump on next part. How does mandala motive work in Patrick White, The Solid Mandala? How does the mandala motive work in Patrick White's The Solid Mandala? Discuss. Come next question. How does the mandala motive work in different ways? अभी थोड़ा चेंज हो गया. In different ways at the level of theme and structure. At the level of theme and structure in the novel The Solid Mandala. Next, analyze the use of myth and symbol. Analyze the use of myth and symbols in Patrick White's Solid Mandala. Next, the last one from this story. Write a critical note on characterization in Patrick White's The Solid Mandala. Characterization क्या है, उसको कैसे क्लियर करते हैं, वो सब आपको बताने हैं. Jump up to next part, The Stone Angel, the last story line. ये मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी, मतलब मजा पढ़ने का आएगा बहुत. फेवरेट नहीं, लेकिन हाँ फिर इंटरेस्टिंग डेफिनेटली बहुत है. कहता डज हैगर शिपले एवर कम टू टर्म्स विद अ गिल्ट कॉम्प्लेक्स? क्या अपने गिल्ट कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल पाई वो? पता नहीं सर, सीरियस नो आइडिया. डिस्कस द रेफरेंस टू द स्टोन एंजल. नेक्स्ट वन, व्हाट रोल डज द स्टोन एंजल इन द नॉवल द नेम और द सेम नेम फुलफिल? स्टोन एंजल क्या हाईलाइट करती है, टाइटल प्रोपोजिशन कह सकते हैं इसे. कहता है, is the self-alienation of Hagar shifting in a Margaret Lawrence, the Stone Angel, a consequence of pride on her religion background? Give reason. Next, what is the significance of the past for Hagar in Stone Angel? Significance of past. What are the main thematic concerns in the Stone Angel? Thematic concerns क्या mean? वो हमें बताने in Stone Angel. So I hope you guys will do all these for the upcoming exams. Those who want to join the online session can contact. Wish you all the best, guys.